तो सेकंड ले लूंगा. Please start, ma'am. हेलो. Please start, ma'am. ठीक है जी. Okay. Good afternoon, everybody. So here we are with the second session of India Democracy and Development. मैं डेवलपमेंट आपको कल करवाऊंगी so that पहले मैं आपको सारा इंडिया के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आप समझ लीजिए. उसके बाद डेवलपमेंट समझाना बहुत इजी हो जाएगा और समझना बहुत इजी हो जाएगा. राइट नाउ वी स्टार्ट विद, मैं यूनिट्स बोल रही हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि मोर और लेस सारा डिस्कस हो गया है. वी स्टार्ट विद यूनिट 10, लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया. Now you have to just give me a minute. Please, oregano. Right. Sorry. Right. Now जो लीगल सिस्टम है इंडिया का वो कहाँ से शुरू हुआ? Now एंशिएंट इंडिया में एंड स्पेशली अगर आपने आई एम फैसिनेटेड बाय चाणक्य, कौटिल्य, राइट. उनसे भी पहले उन्होंने जो कोडिफाई किया इंडिया में शुरू से क्या चल रहा था, इट वाज ऑलवेज धर्म, राइट. धम्मा कह देते थे, धर्मा कह देते थे. धर्मा वाज अ सेट ऑफ इटर्नल लॉज व्हिच एवरी पर्सन हैड टू फॉलो अकॉर्डिंग टू द कास्ट इन व्हिच ही और शी वाज बोर्न, राइट. कि जो हमारा लीगल सिस्टम था वो उसमें जितने भी किंग्स थे वो फॉलो करते थे वो लॉज जो कई सेंचुरी से ओरली ट्रांसफर किए जा रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर, राइट. मोनार्कीज होती थी, किंग का रूल होता था हमेशा, राइट. वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, यूरोप में, इंडिया में जहां भी किंग था, राजा होता था, wherever you had the king, the word was the king can never be wrong. The king does nothing wrong. The king can do no wrong. Right? United Kingdom में अभी भी जब king की death है, they say the king is dead, long live the crown. The king is dead, long live the king, या long live the crown. Right? The king was all in all, monarchies थी. किंग डिसाइड करता था, किसी ने गाय की चोरी कर ली, दो किसानों में लड़ाई हो गई, कोई चोरी हो गई, एवरीवेयर द किंग डिसाइडेड गिव जस्टिस अकॉर्डिंग टू धर्म. ही वुड कंसल्ट हिज एडवाइजर्स, हिज प्राइम मिनिस्टर, द ब्राह्मण्स. And let me tell you, Dharma was always tilted in favor of the upper caste, right? कि एक टाइम वो भी था जब अमीर वर्ग धर्म को मतलब जस्टिस को, even in Europe, even in India, rich people could buy justice, right? यूरोप में, we talking about India, but यूरोप का एग्जाम्पल दे दूं, that there were जमींदार जिनको वहाँ barons कहते थे. The barons used to go riding through the streets on horses, right? घुड़सवार वो होते थे, हॉर्स राइड के लिए निकलते थे और रास्ते में गांव से क्रॉस करते थे. कोई बच्चा मर गया, कोई बूढ़ा मर गया, कोई भी मर गया तो वो कुछ चिल्लर फेंक के, कुछ पैसे फेंक के कह देते थे that's it. That was the cost of human life. That is why slowly people rose up in revolt, because in a monarchy वहाँ जहाँ king का rule है, people were not equal. The king was here, the church was here, मतलब the temples and all were here, and the people were here. Democracy इतनी, लोकतंत्र इतनी प्रचलित क्यों है? Why is democracy such a hit with the people? Because everybody is equal. Yes, there are some people who are more equal than the others, but more or less, अगर आप जाके देखो, in the court you find, for example, in the recent past, whenever there has been some atrocity committed against the so-called scheduled caste, अगर lower caste के खिलाफ कहीं भी कोई ऐसी atrocity, torture हुआ है तो जुडिशरीज की हेल्प में आई है, राइट. एक जमाने में खाप पंचायत जो हरियाणा की है, अगर वो ऑनर किलिंग्स करते थे तो democracy has come to your help by saying that India has one legal system: Supreme Court, High Court, District Courts,
and then the village panchayats, right? That ये एक triangle की तरह है हमारी judiciary. You have at the apex you have the Supreme Court, then you have the high courts, and then you have the district courts, right? That there will be only one law in the entire country, and Khap Panchayats cannot decide that a boy and girl have to be killed because चाहे वो adults थे but वो भाई बहन लगते थे. Nothing of that sort, right? So आमिर खान का अगर आपने प्रोग्राम नहीं देखा होगा सत्यमेव जयते, तो उसमें उन्होंने खाप पंचायत के लीडर्स को बुलाया था, उनसे बात की थी. दो खाप पंचायत के लोगों ने अपने आप को बहुत डिफेंड किया, बट more or less the judiciary said that there is only one law in the land, और वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो जुडिशरी है. Now what is judiciary in India? It is आपने हिंदी मूवीज देखा होगा, वो जो न्याय की मूर्ति है वो स्केल्स, वेइंग स्केल्स लेके खड़ी होती है, which says that law does not see who is rich or poor. It just वो ब्लाइंड फोल्ड होती है, आंखों में पट्टी बांधी होती है. उसका यही है कि चाहे कोई भी आ जाए न्याय दिया जाएगा. जैसे हमारी हिंदी मूवीज में कहा जाता है, अगर 100 मुस्लिम छूट जाएं, if 100 criminals are allowed to go, if they manage to go, let them go, but an innocent cannot be punished, right? So the legal system is like this. So once upon a time in ancient India, you had आपको वो दी जाती थी, आपको न्याय दिया जाता था according to religion, according to your dharma, right? जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने वो सारी जो हमारा एंशियंट अनरिटन लॉज थे उनको कोडिफाई किया, राइट? उनको इकट्ठा किया. The Britishers believed in writing everything, right? That is why they wrote. That is why we can have a peep into what the Britishers were doing. Why? Because चाहे डायरी राइटिंग है, चाहे कोई फाइल यहाँ से जानी, चाहे पर्सनल डायरी है, ब्रिटिशर्स ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जरूर लिखा है, राइट? तो उनकी एक आदत थी. सो उन्होंने उसको एक कोडिफाई किया, और कोडिफाई करके उन्होंने एक लीगल सिस्टम बनाया. अब आफ्टर इंडिपेंडेंस संविधान हमने लिखा, हमारे लीडर्स ने, दे रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उसमें उन्होंने कहा दैट देयर विल बी अ सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, then you'll have the high courts, and then you will have the district courts, right? अब जो आपके सुप्रीम कोर्ट है वो एक है, वहाँ आपके सुप्रीम आपके चीफ जस्टिस हैं, और साथ में आपके दूसरे जजेस हैं. आजकल आप सुप्रीम कोर्ट के बारे फ्रॉम द पास्ट 2-3 years you must be reading a lot about सुप्रीम कोर्ट. जजेस की अपॉइंटमेंट हो जाए, या आई वुड लाइक टू डू अ स्मॉल वर्ड विद यू ओवर हियर, जुडिशियल activism, right? What is judicial activism? That 1990s say the judiciary has become very, very active. Now you have to know, मैं अगला भी आपको साथ में करवाती हूँ so that you understand. जो आपका unit 11 है, federalism है. Federalism means powers are divided between the center and states, right? Now when powers are divided, संविधान ने लिखा है that the powers will be divided between the center and the states. That is why we are known as, India को फेडरलिज्म बुलाया जाता है. You have to know 3 words. First of all, फेडरलिज्म, then यूनियन. आप तीसरा वर्ड भूल जाइए, चलो वो हम कॉन्फेडरेशन बाद में कर लेंगे. There are in America was a confederation, right? Okay, let me do it also. What is a confederation? अमेरिका में फेल हो गया. In the beginning, at the moment, how many states are there in America? 50. Once upon a time, America में कितनी states थी? Only 13. 1-3. Right? Slowly, 13 states पहले इकट्ठी आई, and they decided that America will be a confederation. Confederation का मतलब क्या है कि सेंटर के पास मिनिमम पावर्स होंगे. The center will have minimum powers. कैसे होंगे? Protection of boundaries, बाकी स्टेट्स के बीच में तालमेल बिठाना, डिफेंस जिसको हम कह सकते हैं, तालमेल बिठाना, एंड बिजनेस, ये ट्रेड को का तालमेल बनाना, बस. बाकी नाउ मेन थिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, कॉन्फेडरेशन मीन्स व्हेन अ यूनिट, 13 स्टेट्स है ना, उनको 13 यूनिट्स बुलाएंगे. अमेरिका में हम स्टेट्स बुलाते हैं. व्हेन आप इकट्ठे आए हो
13 स्टेट्स इकट्ठी आई हैं, उनमें से कोई भी बीच में से निकल सकता है कभी भी, राइट? सो कॉन्फेडरेशन इज यूजुअली अ फेलियर. व्हाई? बिकॉज जो सेंटर का ध्यान होता है, it is less on keeping, it is less on progress, it is more on keeping the states together. Have you understood this? जो सेंटर गवर्नमेंट है वो उसका ध्यान किसमें होता है कि इन 13 की 13 को मैं इकट्ठा रखूं कि कोई ना टूट जाए, तो उसमें ज्यादा काम नहीं हो पाता. सो अमेरिका फेल्ड एज अ कॉन्फेडरेशन, राइट? Then America has become a federation. What is the meaning of a federation? India is not a true federation. Federation का मतलब क्या है? Where the powers are equally, more or less equally divided between the center and states. अब अमेरिका में क्या है? You are a citizen of America, but you are also citizen of your state. जो 50 states के आपके पास dual citizenship है. नागरिकता आपके पास कौन सी? 2 है. आप अपनी state के भी नागरिक हैं और अमेरिका के भी नागरिक हैं, राइट? डबल कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय डबल कॉन्स्टिट्यूशन? अमेरिका का एक संविधान है, हर स्टेट 50 स्टेट्स का भी अपना संविधान है, पर वो जो संविधान है वो किसके मुताबिक चलना चाहिए, किसकी लाइंस पे होना चाहिए? सेंटर के, राइट? इफ अमेरिका इज अ रिपब्लिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब है वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, राइट? गणतंत्र का मतलब क्या है? जहां आपका राज्य का जो मुख्य है, वो प्रधानमंत्री हो सकता है, वो राष्ट्रपति हो सकता है, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाए, राइट? सो जो 50 स्टेट्स है वो भी रिपब्लिक है. वहां का जो गवर्नर है, राइट, इन अमेरिका जो स्टेट्स हैं उसका ऑल एंड ऑल कौन है? मोस्ट पावरफुल मैन कौन है? राज्यपाल, गवर्नर, राइट? ही इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट्स, राइट? सो फेडरेशन में द पावर्स ऑफ द सेंटर के थोड़े से ज्यादा पावर्स होंगे, बट मोर और लेस स्टेट्स के बड़े पावर्स हैं. और जो फेडरेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बार बार स्टेट्स में बिना मतलब के इंटरफेयर नहीं कर सकती है. अमेरिका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1776 और अभी तक 2020 तक यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर टिप्स कब सेंटर हैज इंटरफेयर्ड इन एवरी स्टेट. स्टेट्स डोंट लेट द सेंटर इंटरफेयर. Not like India, where the chief minister is sleeping and army को भेज दिया जाता है into the center, right, into the states, right? That is why India is not a true federation. It is a quasi-federal. Now, I hope you understood what is the meaning of federation. Federation वो है जहाँ powers center और states के बीच में divided हो, ठीक है? इंडिया में बिल्कुल डिवाइडेड है, बट मैं आपको बाद में इसकी सारी स्टोरी सुनाऊंगी. एंड यूनियन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. कैन यू बिलीव इट? आप ये चीज ध्यान में रखिए. द वर्ड फेडरेशन इज नोवेयर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरेशन वर्ड जो स्टेट्स और सेंटर को इक्वली पावर्स जिसमें विभाजित करता है, वो वर्ड इंडियन संविधान में कहीं मेंशन ही नहीं है, राइट? व्हाट इज मेंशन? India is a union of states and it is an indestructible union. ये क्या है? एक संघ है. इंडिया क्या है? it is a union. Union का मतलब है where the center is more powerful than the states. राज्य से जो आपके राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, इन सबसे ज्यादा पावर्स किसके पास है? सेंटर में. कोरोना के टाइम आपने देख ही लिया, every chief minister is asking for aid from the center, right? So federalism में you have a power divided between the center and states, और इस पावर का उल्लंघना ना हो उसको, उसकी देखरेख कौन करता है? संविधान. और संविधान की देखरेख किसकी काम है? It is the work of the judiciary, right? Now you and I usually think that judiciary का काम क्या है? झगड़े निपटाना, right? That what do we think? To settle disputes. Now disputes between whom? Disputes can be between the center and state. It can be between center and 2 states. It can be between 2 or more states, right? And it can be between government and the individual. It can be among individuals, right? That हम क्या कहते हैं कि सारा काम जुडिशरी का क्या है? झगड़े निपटाना, right? झगड़े किसके बीच में निपटाना? सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट, या 2 स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, या गवर्नमेंट और व्यक्ति के बीच में,
या दो व्यक्तियों के बीच में, राइट? यस, ये सारा काम जुडिशरी का है. आई एग्री, दिस इज द वर्क ऑफ जुडिशरी. योर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दे सी टू दिस ओनली, राइट? But there is one more work of the judiciary which is very very important. It is the guardian of the Indian Constitution. जो आपका जुडिशरी है ना, ये संविधान देखता है कि उसकी उल्लंघना ना हो. And it sees to it that the status quo remains the same. कि जैसे हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बोला है वैसे ही संविधान सारी कार्यकाल सबका वैसे ही, राइट? सो व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज, अब इंडिया कैसे क्वालिफाई करता है? यस, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ये आपको बात मान के चलनी पड़ेगी दैट द सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स, राइट? बट at the same time you have to understand that why are we a federation? हम फेडरेशन क्यों है? क्योंकि जब पीस टाइम है, right, when there is no war, when everything is fine, then there is a parallel machinery at the state level, right? If you have the, मतलब during peace times India is a federation. अगर आपके पास वहाँ प्रेसिडेंट है तो हर स्टेट में गवर्नर है. If you have the prime minister there, you have a chief minister here. If you have two houses parliament there, you have one or two houses over in every state. पर जैसे ही किसी स्टेट में सेंटर को ये लगता है, if the center feels that किसी भी स्टेट में संविधान के मुताबिक मशीनरी नहीं चल रही है, वो आर्टिकल 356 लगा के इमरजेंसी लगा सकता है, राइट? दैट when it is a peace time, we have a parallel government at the center and state level. But if the government feels at the center that the constitutional machinery is being violated, then it can impose emergency in that state, जिसके साथ आपके elected government को dissolve किया जाता है और सारा कार्यभार किसके हाथ में आ जाता है? गवर्नर के, राज्यपाल के. All the administration goes in the hands of the governor, who is appointed by the center, by the president of India, right? So यही चीज की उल्लंघना है that states feel that we actually don't have any independence because Article 356, failure of constitutional machinery in the state, can be applied to any state at any time, and it has been misused in the past many times, right? So ये जो legal system है उसमें आपने अभी एक word बनाया बताया था, judicial activism. Now, in every country, government is divided into three parts, right? मतलब तीन parts: legislature, executive, judiciary, right? विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, right? Now, एक तो ये division हो गई है, this is horizontal division. एक आपका है center gives powers to the states give power to the district, village panchayats and municipal corporations and committees, right? So from the past many years, 1990 से एक word उभर के सामने आया, judicial activism, right? That judiciary has become very active, and in many cases it is doing the work of the legislature also, right? अब legislature मतलब आपका parliament. अब जुडिशरी कहती है कि जब लेजिस्लेचर काम ही नहीं कर रहा है, कोई पेपर फैन के बाहर आ जाता है, कभी एडजर्नमेंट मोशन हो जाता है, कभी वॉकआउट हो जाता है, कभी मतलब देयर इज अ रकस इन द पार्लियामेंट, कि पीपल कैन नॉट वेट, दे वांट अ लॉ. फॉर एग्जांपल, इन 1990s दिल्ली हैड बिकम वेरी पोल्यूटेड. दिल्ली बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गया था. सो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन पास किया, जजमेंट पास की, दैट क्लीन अप दिल्ली, राइट? Now the parliament said, how dare you give us orders? हम लोगों की नुमाइंदे हैं, not you 25 judges. We have been elected by the people. Now सुप्रीम कोर्ट ने कान ऐसे पकड़ने की जगह ऐसे पकड़ लिए. उन्होंने कहा that we are the protectors of the rights of people, right? लोगों के जो संविधान में मौलिक अधिकार लिखे गए हैं उसके हम लोग क्या है? गार्डियन है. We are the guardian, right? Now when you are not giving clean air, water to the people to drink and to inhale, then what is being endangered? Their right to life. कि हम मौलिक अधिकारों को हमने बचाना है, ये संविधान को हमने बचाना है, मौलिक अधिकारों को हमने बचाना है ना? अब जब आप लोग, राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट,
दैट जीने का अधिकार, दैट अगर आप लोगों को साफ पानी नहीं दे रहे हो, 4 महीने के बच्चों को एस्थमा हो रहा है, राइट, तो इनडायरेक्टली उसके कौन से अधिकार के ऊपर उल्लंघना हुई है? राइट टू लाइफ. And that is why we have passed the order that clean up Delhi, and Delhi was cleared. Now, this is the way the word judicial activism has been used. That judiciary has become active, right? Legislature doesn't like it, Parliament doesn't like it, because वो कहते हैं आप appointed हो, you are not elected. You judges are not elected by the people. You are appointed. You do not represent the people. Judges ये कहते हैं that because you're not doing your work, people cannot wait, so we have to pass an order, right? तो judgment करा के हम काम कर लेते हैं, because who is the main focus? That is the people, right? So judicial activism, right? Now we come to public interest litigation, right? जो आजकल काफी misuse भी हो रहा है. I am staying in Chandigarh, right? But I can file a case for people staying in Jharkhand, right? In greatest interest. Public interest litigation. Litigation मतलब पढ़ाई लिखाई, लिखित पढ़ाई, right? That लोगों के हित में जब कोई litigation की जाए, that is known as PIL, and it is not expensive. You can just do it if you feel anything is going wrong. That एक आदमी के अधिकारों की उल्लंघना नहीं हो रही है. Many people's rights are being violated. अब ये जो PIL है, ये पीछे बहुत ज़्यादा misuse होने लग गया था. It was being misused. That is why the Supreme Court has come down very heavily on PIL. That if you file a wrong PIL, public interest litigation, then you can be punished also, right? So ये PIL आप काफी newspaper में पढ़ते रहोगे. Now what I would like to explain is judicial review, right? Judicial review is very difficult to understand, but if you understand it once, it will be very easy. Judicial comes from the word judiciary, न्यायालय. Review means revision. As I just told you, हर country में you have 3 parts: horizontal division of power, legislature, executive, judiciary, right? अब इसको हम कहते हैं separation of powers, right? Separation Montesquieu ने दिया है. He was a French thinker, or separation of powers and checks and balances, right? And America was the first country to implement his ideas. So you have legislature, executive and judicial, right? Legislature का काम क्या है? To make laws, कानून बनाना. Executive का काम क्या है? उनको लागू करना, to implement them. And what is the work of the judiciary? To see if there is any dispute, if there is any violation, right? Now, साथ में Montesquieu ने दिया separation of powers and checks and balances. Now, 3 of them have their own areas of working, but at the same time they keep a check on each other, right? पहली बार आप समझ लो, लेजिस्लेचर में कौन आता है, विधान पालिका में कौन आता है? आपका पार्लियामेंट. वहां चाहे एक हाउस हो या 2 हाउसेस, राइट? एग्जीक्यूटिव में यू हैव द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद. और जुडिशरी के लिए, टू नॉट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, आई विल यूज द वर्ड सुप्रीम कोर्ट, राइट? नाउ these people, legislature, are elected by the people. जो यहाँ मेजोरिटी में आएगा, whoever will get a majority in the legislature will become the prime minister and they will form the council, right? So देखा जाए तो ये दो, of course you have the opposition over here. In the legislature you have the opposition, but more or less, right? More or less, both these are in the same hands, in the same party, in the hands of the same party. ये जो दोनों legislature executive है, more or less, क्योंकि इनको majority मिली है, more or less they are in the same party, in the same hands, एक ही हाथ में, एक ही पार्टी. अब ये मिलकर जब आपके पास इतना बड़ा बहुमत है, if you got a big majority, you can frame any law which takes away the rights of people. Then who will protect us? Judiciary, Supreme Court. अब वहां पे, right? अब यहाँ आता है आपका judicial review. अब what is judicial review? When any law passed by the parliament goes against the basic principles of the constitution, then that law can be declared null and void. मुश्किल लग रहा है, मैं भी बताती हूँ कि अगर कोई लॉ, कोई कानून
जो पार्लियामेंट ने पास किया है, अगर वो संविधान के खिलाफ, इंडियन संविधान के खिलाफ जाता है, तो जुडिशरी या न्यायालय उसको रद्द करार कर सकती है, राइट, पर ऑटोमेटिकली नहीं, राइट। अगर it can declare it null and void only when one of us gets up and files a case that this law is going against the basic principles of the constitution, right? If we don't get up, Supreme Court को पता है that this law is going against the constitution, it cannot do anything. So हम फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं, बीए फर्स्ट ईयर में, eternal vigilance is the price of liberty. Eternal vigilance is the price of liberty. कि स्वतंत्र रहने के लिए आपको eternally means forever, vigilant means alert, हमेशा आपको alert रहना पड़ेगा, तभी आपकी स्वतंत्रता प्रोटेक्ट हो सकती है. Eternal vigilance is the price of liberty. Only when you citizens are forever alert, then only your liberty can be protected, right? So basically, what is judicial review? When any law goes against the basic principles of the constitution, it can be declared null and void by the judiciary. अगर कोई कानून जो पार्लियामेंट ने पास किया है, अगर वो संविधान के खिलाफ जा रहा है, उसके बेसिक ढांचे के खिलाफ जा रहा है, उसको जुडिशरी रद्द कर सकती है अगर आप और मैं उसको चैलेंज करें, राइट. सो दिस मेक्स द जुडिशरी ऑफ इंडिया वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल. इट कैन ब्लॉक एनी लॉ, राइट. Now, the parliament doesn't like this power of judicial review. Why? Because वो कहते हैं कई बार progressive laws रोके जाते हैं just because the parliament judiciary is acting very high-handed, right? So this is separation of powers and our checks and balances, right? This is very important, and this happens in America. So अगर आप Montesquieu समझ लोगे, it will be very easy for you to understand everywhere separation of powers and checks and balances. Now, one thing you have to remember is जो तानाशाही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां भी आपके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, राइट, बट दे आर कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन. वो सिर्फ शो के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है. नाउ इन अ डेमोक्रेसी दे शुड बी विद थ्री सेपरेट हैंड्स, राइट. अब सेपरेशन ऑफ पावर्स आपको समझ आ गया, शक्तियों का विभाजन आपको समझ आ गया. नाउ चेक्स एंड बैलेंसेस, राइट, यूजुअली क्लास में बोर्ड में करवाती होती हूँ, राइट. I just told you, three of them have three different areas of working. कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का काम है उनको लागू करना, और जुडिशरी का संविधान का उल्लंघन लागू. अब checks and balances. Now they all are dependent on each other. As I told you, whoever gets a majority in the parliament, जिसको भी बहुमत मिलता है संसद में, वो क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री, वो कार्यपालिका, right? Does that mean that the prime minister can do anything in the parliament? No. जो भी वो पॉलिसी ड्राफ्ट करके लेके जाएंगे वो या उनके मिनिस्टर्स, whatever policy is taken, they want it to be converted into a law. हम law word नहीं यूज करेंगे, उसको भी पॉलिसी मैटर होता है. वो लेके जाएंगे उसको बिल का एक शेप देके. They have to clarify, they have to justify to the opposition that why that law is needed, right? So you so checks and balances क्या है? Law pass होना है तो opposition also has to say yes or it has to question, right? Now how do they check each other? If the opposition keeps saying कि हमने कुछ काम नहीं होने देना या सिचुएशन ऐसी कर देते हैं, तो जो प्रधानमंत्री है, he can advise the president of India, let us dissolve the house. हम लोकसभा को भंग कर दें. राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, अपर हाउस इज अ परमानेंट हाउस. कि हम लोकसभा जो लोअर हाउस है उसको भंग कर दें, राइट. लेट अस, एंड प्रेसिडेंट हैज टू लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर, राइट. सो व्हाट इज द कंट्रोल व्हिच द प्राइम मिनिस्टर हैज ऑन द पार्लियामेंट? ही कैन सजेस्ट इट टू बी द हाउस टू बी डिसॉल्व्ड. नाउ डज दैट मेक द प्राइम मिनिस्टर वेरी वेरी पावरफुल? नो. How does the legislature control the executive? वो कैसे चेक रखते हैं?
the opposition can threaten that we will pass a vote of no confidence against you. हम आपके खिलाफ वोट पास कर देंगे नो कॉन्फिडेंस की. पीछे राहुल गांधी ने किया भी था, राइट. सो दिस इज हाउ दे चेक ईच अदर, राइट. नाउ समझ आ गया आपको लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैसे एक दूसरे को चेक करते हैं. एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है वो हाउस को प्रधानमंत्री उस हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं. हाउस कैसे कंट्रोल करता है प्राइम मिनिस्टर को कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर देंगे, राइट. नाउ आया आपका तीसरा जुडिशरी. ऑल द जजेस are appointed by the prime minister and the council. Of course certain qualifications have to be met. थोड़ी qualifications तो पूरी करनी पड़ेगी. To be a Supreme Court judge you have to be practicing as a judge for 5 years or an advocate in High Court for 10 years. You should be a legal jurist, expert on law, etc. वो तो है, right? पर ये सारे जो मामले इतनी हाई पोस्ट होते कई बार पॉलिटिकल हो जाते हैं, right? So the Prime Minister and his council pick up judges, right? But does that mean the judges are indebted to the Prime Minister कि वो हमेशा वो कर्जा मान के चलेंगे? No. Once they are appointed as the पहले तो उनकी appointment, उनकी salary, perks, pensions, conditions of service, everything is decided by the Parliament, right? And the judiciary, जो judges हैं, their salaries, perks, pensions cannot be reduced during their lifetime. They can only be improved. ये क्यों किया गया? They can only be increased. ये क्यों किया गया कि भाई you are occupying one of the top offices in India. आप अपना काम बेधड़क से करो. Nobody can remove you. Nobody can reduce your salary. Yes, they can be removed. I'll come to that later, right? But it's a very difficult process, right? And you cannot practice after retirement. You cannot practice after retirement. Right? So इससे judges को क्या होता है? They are secure, right? But so have you understood this? Appointment by the Prime Minister and Council, but all the perks, pensions, जितनी भी उनकी salary, pension, वेतन सब कुछ decide removal किसने करना है? Parliament, right? How does the judiciary control the Parliament and executive? जैसे मैंने आपको बताई दिए, by the power of judicial review. Right, judicial review से कि अगर कोई कानून which will go against the Constitution of India, it can be declared null and void by the judiciary. Right? Now, does that make the judges supreme? No, they can also be controlled. यहाँ आपका आता है process of impeachment. Right? Thankfully, no judge has been impeached in India till now. Right? Now, what is impeachment? और ये सिर्फ judges नहीं है, high officials, President of India, it is used there. Impeachment is a process of removal of a high official from his post before his tenure is over, right? In simple words, impeachment ये आपके मेरे लिए नहीं है, जो बहुत important post है, President of India, Judges of Supreme Court, Comptroller and Auditor General, Judges of High Court. जब किसी high official को उनकी पोस्ट से उनके टेन्योर खत्म होने से पहले जबरदस्ती फोर्सिबली रिमूव किया जाता है बाय द पार्लियामेंट, दैट इज नोन एज प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, राइट. पार्लियामेंट वोट करती है. सपोज एक जज, पीछे कई जजेस के खिलाफ पार्लियामेंट ने कहा हम प्रोसीडिंग शुरू करेंगे. जब ऐसा होता है द बेस्ट वे टू डू इज दैट पर्सन रिजाइन्स, वो रिजाइन कर देता है, राइट. क्योंकि ये बहुत बेइज्जती वाली काम है. आप बिल्कुल यू आर एट द टॉप ऑफ योर करियर, आप इसके साथ घर नहीं जाना, इस बेइज्जती के साथ घर नहीं जाना चाहते, राइट. सो हाउ डू दी पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल दी जजेस? बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. कि अगर आपके पास जुडिशियल रिव्यू है दैट इफ यू कैन स्टॉप एनी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट देन वी कैन यूज प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. But using the process of impeachment is a very, very difficult task. Right. Now let me tell you why. If a judge, constitutional bench होता है 5, 9, 7 judges का. Now, if there are I'm just taking a small example. If there are 5 judges, right? एक तो chief justice होगा ही होगा. Suppose these 2 judges are always giving their judgment against the government. हर चीज में अगर वो anti government है, right?
government will say let us remove them by the process of impeachment, right? कि चलो इनको remove किया जाए. Now to have a impeachment process passed, you need a 2/3 majority. अब judges जब government को control, वो दो judges, when those two judges are keeping the government on its toes, जब उसको उनके खिलाफ उनके काले चिट्ठे खोल रहे हैं, right? Whose work are they doing indirectly? Oppositions. किसका काम कर रहे हैं? विरोधी दल का. So in the parliament, the opposition will not let the impeachment process be passed. They will not vote against that judge. Right? It is a very difficult process. That is why till today no judge has been impeached, no president of India has been impeached. Thankfully, it is a very big stigma. Right? So have you understood what is federalism and what is legal system? Judges के बारे में मैंने आपको बता दिया, how they are appointed. The judges of Supreme Court cannot be transferred, but judges of High Court can be transferred, right? आज से 10 साल पहले एक चंडीगढ़, आप तो छोटे होंगे, चंडीगढ़ में एक नया कॉन्सेप्ट मीडिया ने बनाया था, अंकल जजेस की 2 फ्रेंड्स आर देयर, छोटे होते से फ्रेंड्स हैं, एक जज बन गया, दूसरे का बच्चा लॉयर बन गया, अब उसने उस बच्चे को हाथों में खिलाया है. Now when his case goes to his uncle's court, bail तो मिल ही जाएगी. Why? Because uncle है, the judge is an uncle, right? So इससे एक नया concept सामने आया uncle judges का, right? So that is why judges are transferred in different high courts. और ये भी देखा जाता है कि if you know the judge, then your case will not be filed in that court, because many clients would go to that lawyer कि भाई इसके तो वो 3-4 अंकल जजेस हैं तो बेल तो मिल जाएगी. So yes, reforms हुए, काफी reforms हुए, right? So India is not a federation. India is a union of states, but in peace times it's a federation. That is why Myron Wheeler has said India is quasi-federal. India क्या है? ना ये पूरी तरह union है, right? ना ये पूरी तरह federation है, बीच में चाले, तो इसको हम quasi-federal कहते हैं. अब यूनिट 12 मैंने आपको बता ही दिया था एक दिन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1992 में 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, जिसके साथ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैव बीन मेड वेरी स्ट्रांग. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई न्यू फैमिलीज जो पिछले 50 सालों से सरपंच उन्हीं की फैमिली से बनता था, राइट? बट दिस ऑल चेंज, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, इट वाज गांधीज ड्रीम. It all changed in 1992 when elections have been made compulsory for municipal corporation, municipal committee and village panchayats, right? When we were growing up, we didn't hear about elections to municipal corporation and committee. ये सब 1992 में हुआ. And अब आपके छोटे towns में committee, municipal committee की election होती है, everybody is alert. Corporation की होती है, big cities में everybody is alert, everybody takes an active interest. विलेज पंचायत में इलेक्शंस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है. सो दैट ऑल हैपेंड विद द 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हिच वाज पास्ड इन 1992. अब आपका यूनिट 13 है पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टिसिपेशन. You can participate in your political system through various ways. सबसे easy और सबसे कॉमन कौन सा? वोटिंग, राइट? अब आपके यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है, वोटिंग बाय रेफरेंडम. This is in countries like Switzerland. Referendum का मतलब refer to the people. There are countries, small countries में एक successful है, where see, one thing you have to understand, पहले एक bill बनता है. When Parliament passes it, the President puts his signature, then that bill becomes a law. फिर वो कानून बनता है. Now in some countries like Switzerland, बहुत छोटी जो countries है, वहाँ जब एक bill बनता है, कानून बनने से पहले उसको लोगों के पास भेजा जाता है. In the streets, in the town hall, stadiums पे लगाया जाता है. People have to sign that yes. By chance, if एक bill लगा है and people do not sign, the government has to resign. कि आपको यही नहीं पता कि आपके लोगों को कौन सा बिल चाहिए, कौन सा बिल नहीं चाहिए, right? So referendum means refer to the people, which doesn't happen in India, in big countries. Then you can participate in many ways in your political system by campaigning, right? Every political party has leaders, it has followers, and बीच वाला जो है वो है active party workers, right? So it depends what you want to be.
अगर आपने ऐसे नहीं पार्टिसिपेट करना, यू कैन बिकम मेंबर ऑफ सम एडवाइजरी कमिटी, you can help the government by floating new ideas, by participating in surveys. So that is, and political parties, तो आप सबको पता ही होगा that we have 7 national political parties and over 700 regional political parties. And कई लोग कहते हैं कि political parties करके there are lot of evils. There are others who say that it means it is a very mature democracy. It's only in a democracy that you can have so many political parties. And then Unit 14 is workers and peasant movements. ये समझने के लिए आपने एक ध्यान में रखना है that industrial revolution started from United Kingdom. They were our masters, so वहाँ से आपकी industry यहाँ पे आ गई, इंडिया में आ गई. In the beginning, workers were आपके बुक पे इसको डिवाइड किया गया है. The worker and peasant movement from 1850s to 1918, then 1918 to 1918 to independence, and now. You have Tatas who are doing a lot. Workers का बड़ा ख्याल रखते हैं. They are great philanthropists. Mahindra है. ये सारा कुछ change हो गया with the LPG, liberalization, privatization, and globalization, when MNCs, multinational corporations, came into our life, right? Yes, market बड़ी happening होगी, brands की हमें आदत पड़ेगी, but इसमें worker का बड़ा loss हुआ है. Workers have really lost out on LPG. Call centers हो गया, theaters हो गए, malls हो गए. इसमें workers have suffered. Why? Because in India usually you had government jobs in which you retired at the age of 58. MNCs के आने के साथ दो आपको बताया मैंने कल, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो निर्देशक सिद्धांत चैप्टर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज है. देयर आर लॉट ऑफ राइट्स व्हिच हैव बीन गिवन टू द वर्कर्स, बट विद द कमिंग ऑफ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, MNCs के आने के बाद वर्कर्स का बहुत बुरा हाल हुआ है. स्पेशली द MNCs ने किसको फायदा किया है? इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन को एंड स्किल्ड लेबर को, राइट? Others have not benefited. Why? Because MNCs work on the basis of contract. They work on the basis of contract. कि ना PF देते हैं, provident fund भी नहीं देते हैं, inhuman conditions हैं. There's a time to, if you're working in MNC or if you know people who are working in MNCs, वो कहते हैं जाने का time है, आने का कोई time नहीं है. So this has not proved very healthy. The contract system has been very, very difficult for the workers. It has made many people are thrown out from jobs, चाहे वो skilled भी हैं. जैसे profits कम होते हैं, the MNC throws out its people. अब कोरोना के time तो ये बहुत हुआ है. Then you have Unit 15, media and public policy. आज सुबह एक जोक आया कि unfortunately इंडिया चाइना बॉर्डर पे बहुत losses हुए हैं. We have lost out on the best human resources, that is the Indian Army, the Defense Forces, it might be Navy, Air Force, and ये बार बार बोलते हैं लड़ाई करो. तो एक बच्चा अपने फादर को कहता है कि क्या ये अंकल बॉर्डर पे जाएंगे? So media, then you have seen that how Shishant Rajput's death has been covered up very badly as usual by the media. उसके death body, उसका जहाँ उसने hang किया, सब कुछ दिखाया गया है. There are many people who have protested that it goes against the media's regulation. Media ने आपके पास खबर पहुंचानी है, but एक दायरे के अंदर रह के, एक दायरे को respect करके, it has to report according to certain limitations, according to certain ethics, right? Then so what is public policy? A policy which is made for the larger interests of the public. Then you have interest groups and policy making, right? What are interest groups? Pressure groups, दबाव समूह. एक तो होता है political parties और एक होते हैं दबाव समूह, right? The main difference is political parties want to come to power, pressure groups do not want to come to power. जो दबाव समूह है वो सत्ता में नहीं आना चाहते, पर जो political parties हैं वो सत्ता में आना चाहती हैं, right? So जो pressure groups हैं, pressure groups पर political parties, एक political party will talk about employment also, रोजगार की भी बात करेगा, environment की बात करेगा, वातावरण की बात करेगा, women group की बात करेगा,
children के बारे में, it will talk about everything. One pressure group which is formed for environment will talk only about environment. The one formed for teachers will only talk about teachers. The one formed for doctors will only talk about doctors, right? और pressure group का काम क्या है? To see that their interest of the members are fulfilled. कि teachers का जो group है उनको pension मिलना चाहिए, जो भी demands है वो पूरी होनी चाहिए, right? So political parties are vast, they are organized, they talk about different topics, right? Then unit 17 is, और जब भी पॉलिसी बनती है हर इंटरेस्ट ग्रुप उस लॉ को, उस कानून को, उस पॉलिसी को प्रभावित करने की कोशिश करता है. ट्राइज टू इन्फ्लुएंस, क्योंकि एक बार जब कानून बन गया देन नथिंग कैन बी डन. सो when the policy is being made, they try to get it made in their own favor, right? And unit 17 is caste, religion, ethnicity. Now, and I would like to explain the word identity politics, right? Identity politics बहुत गड़बड़ करता है. Identity politics means when you are tied together because of common culture, religion, language, region, or history of suppression, right? Let me make it easy. जब आप एक पूरा ग्रुप इकट्ठा एक कॉमन चीज करके आप अपने आप को इकट्ठा आइडेंटिफाई करते हो, राइट? कैसे आपकी चाहे कॉमन लैंग्वेज हो सकती है, कॉमन हिस्ट्री हो सकती है, कॉमन पूर्वज इंसेस्टर्स हो सकते हैं, जैसे जूज है, कॉमन हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन हो सकता है, कहीं आपके साथ एक पूरे ग्रुप के साथ ट्रेजेडी हो, जैसे जो शूद्राज हैं, शेड्यूल कास्ट हैं. सो ऐसी किसी एक फैक्टर करके आप इकट्ठे जब बंध जाते हैं, दैट इज नोन एज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. दैट आप उस एक चीज करके अपनी आइडेंटिटी आप सामने लेके आते हो. दैट आई एम अ शेड्यूल कास्ट, आई एम अ वुमन, आई एम अ मैन, आई एम फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी, राइट? सो दैट आइडेंटिटी. और इस चीज को लेके पॉलिटिकल सिस्टम में राइट्स भी होते हैं, दंगे फसाद भी होते हैं, because people get together that we have to fulfill our demands, right? So identity politics can be because of caste, religion, language, region, etc. अब एक नया वर्ड आपके पास आया है, ethnicity, right? Ethnic group identity politics का एक हिस्सा है, उसका एक दूसरा नाम है. Ethnic politics is when you are a group with common culture, customs, traditions, religion, language, right? कास्ट भी है इसमें. फॉर एग्जाम्पल जैसे कश्मीरी पंडित, राइट? दे हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ कश्मीर बिकॉज दे वर ऑल हिंदूज, राइट? एंड दे वर पंडित्स और दे वर ब्राह्मण्स, राइट? सो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट कर्स ऑफ इंडिया, राइट? दैट समटाइम्स द पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी आर लिविंग इन इंडिया लाइक एनी अदर सिटीजन. एक आदमी जो लीडर बनना चाहता है, कई बार वो ऐसे बीज बो देता है. He or she sows such seeds and makes people realize that, oh, you don't know this? We have an identity politics crisis, right? कई बार एक्चुअली कोई ना कोई आपके पास ग्रीवियंस होता है, जेन्युइन ग्रीवियंस होता है, कोई जेन्युइन दुख होता है. सो दैट इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. एंड इफ यू रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू विल हैव करंट एग्जाम्पल्स. Then unit 20 is gender and development, women, right? कहीं आर्मी में इनके लिए दरवाजे वुमेन के लिए खोल दिए गए हैं, कहीं वुमेन को वर्क फ्रॉम होम कहा जा रहा है, कहीं वुमेन आर नॉट टेकन, that as soon as they are join a job they will get pregnant, then they will ask for maternity leave, so why take a woman, right? So there are pros and cons. How and women को पढ़ना जरूर पड़ेगा because we women comprise 50% of the population of India, right? Then unit 21 is regional imbalances, which lack of time, so I will like to discuss it tomorrow because it's a very interesting but very unfortunate cause of having problems in India. इसमें आपको मैं नए एग्जाम्पल तेलंगाना के अलावा I'll give you more examples of मिथिलांचल, पूर्वांचल, Madhya Pradesh, etc. So that is for tomorrow. मेरे को बड़ा, this is a very dear topic to me, so I will, जैसे मैंने आप गोरखालैंड, ऐसे बड़े एग्जाम्पल, ये नहीं कि मेरी तैयारी नहीं है, lack of time है, and this needs a lot of time, at least 10 minutes, right? वैसे तो ये एक हफ्ते का टॉपिक है, रीजनल इम्बैलेंसेस,
but why regional imbalances and India में कौन से regions में problems चल रही, we'll discuss tomorrow. And tomorrow is going to be a very heavy session because we'll discuss this as well as development, theories of development. So थोड़ा तैयार होके आना because it's going to be a very tough session, right? I'll try to make it easy and interesting. And unit 25 is religious politics, right? कि धर्म की क्या राजनीति है? I don't think I have to tell you this. Because of religion, we had partition of India, right? और वो जो partition हुई है, उसका कल रात तक effect है that we have lost out on so many soldiers, right? On an average, we lose one soldier in Kashmir every day. And remember, the soldiers are the best human resources in India. सबसे best से best आपके soldiers बनाए जाते हैं, उनको फिर rigorous training दी जाती है. I was reading another story 2-3 days back कि जो आपका paratroopers हैं, IMA की parade हुई थी तो उसमें आपको कई cadets, gentlemen cadets, JCs दिखे होंगे who were in camouflage, वो लड़ाई वाली वर्दी में. तो वो paratroopers होते हैं and out of पहले तो आप सबको ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दी गई है. उन ऑफिसर्स में से कई बच्चे खुद वॉलंटियर करते हैं दैट वी वांट टू बिकम अ पैराट्रूपर. पैराट्रूपर वो हैं जो आपने उस मूवी में देखा था जो पाकिस्तान में उरी अटैक में जाके उनको मार के आते हैं. एंड यू नो व्हाट आई रेड दैट ये जो पैराट्रूपर्स हैं दे आर गिवन, अभी जो ट्रेनिंग है आईएमए की, इससे 90 डेज की और ट्रेनिंग होती है जिसमें दे आर नॉट अलाउड टू स्लीप फॉर 9 to 11 days. एंड और विद इन 90 डेज जो उनके इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके सामने फॉर्म रखते हैं बार बार कि भाई निकल जाओ. दे आर गिवन अ चांस कि इट इज सच अ टफ कोर्स, जस्ट गो अवे, जस्ट लीव. सम ऑफ देम साइन, सम ऑफ देम डोंट. इतनी रिगरस ट्रेनिंग, 100 किलोमीटर्स दौड़ते हैं विद नो रेस्ट, विद वेरी हैवी लोड. ऐसी ट्रेनिंग के बाद डिस्कवरी चैनल पे भी दिखाया गया था. कैन यू बीट इट? These best जो आपके सोल्जर्स हैं इंडिया में, पैराट्रूपर्स, राइट, जो रिपब्लिक डे परेड में दौड़ के कदम ताल करते हैं, most of them do not cross their 35th birthday. Imagine, right? That is what they do for us, right? So that is why that is जो पार्टीशन हुई है जो ब्रिटिशर्स करके गए हैं उसका आज तक हम भुगतान कर रहे हैं, राइट? So, because Pakistan is more or less sold itself to China. So, ये जो religion की बात हम ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, पर करनी पड़ेगी because even after partition we have not learned a lesson. We've had so many riots, इतने दंगे फसाद हुए हैं that the less we talk about religion, we make it personal, it's better, right? So, I hope to see you tomorrow again, and थोड़ा heavy topic रहेगा. But I think we have to do it, so let's do it tomorrow. Till then, stay safe and thank you so much. हाँ जी तेजपाल जी, सेशन खत्म हो गया है. जी मैम, थैंक यू. ठीक रहा सर? सब बच्चे को क्वेश्चन करेंगे. इधर किसी ने कहा है कि आई डू नॉट एग्री विद इट, सोल्जर्स आर गुड ह्यूमन रिसोर्सेज बट नॉट द बेस्ट. सॉरी बेटा, दे माइट नॉट बी द बेस्ट बट दे आर वन अमंग्स. जितिन जोसेफ, दे आर वन अमंग्स द बेस्ट. यस, आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, आईएफएस ऑफिसर्स भी हैं. कोई बेस्ट ब्रेन्स होता है, कोई बेस्ट फिजिकली होता है. हम इधर 3 महीने के विद इन 3 months ऑफ लॉकडाउन वी आर गोइंग इनटू डिप्रेशन एटसेट्रा एटसेट्रा. There are soldiers who stay for 2 years at the border. And yes, जो हमारे IFS officers हैं, IAS officers हैं, IPS officers हैं, each citizen of India is a good human resource. As long as you're working hard, paying your taxes, doing your duties, we all are the best. I'm sorry if you don't agree, but maybe I was a little emotional today because we lost out on so many soldiers. Right? And यहाँ किसने बोला है, अभी भी कोई कह रहा है, a proud paratrooper ma'am, thank you. Whoever you are, if you are a paratrooper, बलिदान का क्रॉस आपके पास है. My respect to you, my salute to you. ठीक है सर? Yes, this is Joseph, scientists, thinkers, every person
taking drugs, who is not doing smuggling, who is not doing corruption, who is working for Mother India? Yes, everybody. Have I answered your question? Uh, can I ask here on audio? Yeah, I can. I do not agree with your notion that the soldiers are the best human resources because in the global politics, what is going on is the global economic game. So, what produces more? It's not the all. Everything, everything. So, Everything, everybody. So the no, struggle no, is but I'm Indian police officers. I told you, Jitin Joseph, that maybe we lost so many soldiers yesterday. The count is still going on. Maybe I was influenced by that. But as a teacher, I think I'm also a good human resource, right? Once upon a time, I taught only in English. My medium was English. I learned Hindi and Punjabi with all the technical terms. I have learned to be very comfortable with online classes. Everybody is a good human resources, but yes, staying away from your families, getting killed for an income plan for your motherland, maybe that may be emotional. Yes, scientists are very important. Thinkers are very important. Everybody is important if you're doing your duty. no. Thank you What I'm so much, saying is, ma'am. Thank you I so got much, your ma'am. emotions, but the thing is, the global politics it gives on a economic basis in the current scenario. It's not a power politics that is happening. Excuse me, but Ma'am, madam, can I add something? one bit. Running after economy has led to this ruin. We are talking to. Yeah. We have to change our priorities. We have been spending too much on sports, on sportsmen, and less on scientists, and less on literature, less on art. Uh, It's Ma'am, all cycle. It's a vicious cycle. It's a very vicious cycle. ma'am, we say that economic for economic prosperity, we say that resources are the best, and like we need other resources also. But how can we compete if there is no security of the nation? We need some Yeah. Yes, of environment course. which gives us. Ma'am, this is the point. The soldiers are giving the environment to compete in the economic sphere. no, if So you're giving soldiers more are, I importance to believe, security, then you're a realist, no, isn't there? Not some kind no. of I'm not giving any. hyper-realism. See, there are I'm three not. Yeah, types of this is a thinkers in realism. India, like See, if there liberals, is a war going hyper-realists, on, and if there is atheists. a war So you're going going for on, a then hyper-realism. how can you? This is the realism of life. See, if your sphere, like you are 100%, you are under the pressure of any government or outsider, like sovereignty. We are talking about the sovereignty of the nation. See, How I'm not can you? saying that sovereignty and the others doesn't matter, but what leads the globe today? I mean, like the LPG, See, she was what is talking about globe? Like LPG and if you'll all. see Indo-China, if you'll see the even the America No, also, what are they facing? What are there they are, facing? so, See, economic prosperity will flourish when you have the security of the nation, no, and no. that you What is cannot achieve happening without between your China and soldiers. India is it's all related to economics. It's not related to the power politics. I don't think No, so. no, no. Please. See, We China's as dream of an Indian, the we believe ये in all such things. no, हाँ no, मैं no. मैं मैं इंटरफेयर करता हूँ प्लीज दोनों बोथ आर द लर्नर स्टॉप द डिस्कशन क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है आप इस बात को समझा करें Yeah, sure. No, Thank sir. you. This is the point Thank you because very much. I wanted to convey because the nation ओके ओके can नो prosper. प्रॉब्लम पूजा ठीक है ये sir. I डिस्कशन आ totally रहा agree with ma'am. I totally agree with ma'am, and she has See, no one is that we can say this is the best, but we can always give our point of view. If there is no No, security, कहाँ से हम फ्लोरिश करेंगे? हम कहाँ से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आएंगे? अगर हमारा नेशन ही सिक्योर नहीं है विदाउट आवर सोल्जर्स, हाउ कैन वी डू दैट? इंटरनल तो चाहिए, इंटरनल हम फ्लोरिश करेंगे जब हम आउटसाइड से हम अपने आप को पूरा see, I वी understand कैन your viewpoint. Your viewpoint is या from a hyper-realistic side. It's not that is prevalent in the globe, in the current globe. but we See, are living in India, so we are like global. no, no, Also, no. you'll see. No, no, It's no. not. If you'll see that in Your which country position you is are going to highly invest, realistic. in which country